about stenting option in a pregnant lady. Okay, I think I'm not aware of any guidelines to put the bare metal stent in a pregnant lady because there is no such recommendation. I think if the lesion is the patient needs stenting, it has to be with the DS, latest generation DS. Yes, sir. The second option, bare metal stent if delivery is near. If then the second option can be new generation less. Yeah, nowadays I think new ready? stent is available आपसे everywhere questions. in Pakistan. सर आपको कंक्लूडिंग करें. I would like to request Dr. Gulshan Ahmed, interventional cardiologist at Mubarak Hospital, to share his ideas about the use of ticagrelor in the routine PCA, post-PCA patients. Sir. Everyone is silent. I think there is net issue. Shahzad, आपका I think mic is, you are mute. Thank you, Dr. Maria, for presenting this case. Unfortunately, there is a network issue and that is many of the participants are not connected properly and presentation slides were not adequately delivered. Extremely sorry for this mishap. So, newer guidelines, there is a now ticagrelor superiority over the clopidogrel. So clopidogrel की जो इंडिकेशन है अब नाउ 2B है, तो लेटेस्ट इंडिकेशन यही है कि अगर इन एनस्टेमी के पेशेंट में आप पीसीआई के लिए जा रहे हैं तो प्रेफरेबली आपने ticagrelor या prasugrel रखना है, ठीक है. लेकिन अगर एज लेस देन 60 है, सॉरी एज मोर देन 75 है और वेट लेस देन 60 kg है या प्रायर टीआईए या स्ट्रोक है, फिर आपने ticagrelor को प्रेफर करना है. अदरवाइज prasugrel और ticagrelor बहुत दिया जा सकता है, ठीक है. और अप टू डिफॉल्ट स्ट्रेटजी यही है कि फॉर 12 मंथ्स आप देंगे डुअल एंटीप्लेटलेट्स. लेकिन अगर हाई रिस्क ब्लीडिंग है तो फॉर 1 मंथ आप डिस्प्रिन के साथ ticagrelor देंगे और आफ्टर 1 मंथ डिस्प्रिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे और ticagrelor को कंटिन्यू करेंगे फॉर 1 ईयर. और अगर अपर जीआई ब्लीड का कोई है तो उसमें आप पीपीआई को ऐड कर लेंगे. और दूसरा, अगर एनस्टेमी के साथ कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है तो आप कल्प्रिट वेसल को डील करेंगे और नॉन कल्प्रिट को उसको डील नहीं करेंगे. और मैकेनिकल सर्कुलेटरी डिवाइसेस का यूज जो है वो बेनिफिशियल है कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स ड्यूरिंग पीसीआई. बाकी स्टैटिन्स का जो है वो वही है कि हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देने हैं. अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 55 अचीव हो जाता है तो दैट्स गुड. लेकिन अगर बिटवीन 55 to 70 है तो इट इज रीजनेबल टू ऐड pemvidouic or ezetimibe to statins. If patient is intolerant to statin, you can give other non-statin drugs to the patient. So, Dr. Waqar Ahmed, you want to comment something? शहजाद, एक जो क्वेश्चन मेरे जहन में है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज मोर देन वन कल्प्रिट लीजन इन एनस्टेमी, सो हाउ टू डील इन सेटिंग ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक? Thank you very much, Professor Shahzad. Excellent talk by Dr. Maria.
I would like to talk regarding anemia. If a patient's HB is less than 10, then we should transfuse and we should raise the HB above 10 milligram per deciliter. That is one point I would say. Thank you, Dr. One month. Later for update. Latest oh, I request Dr. Tahir Shah to please conclude this meeting. Right. But then it we got ये सब पहला एक्सपीरियंस था अच्छा हो गया मतलब Thank you very much for attending this webinar. Unfortunately, our time has been over now.